what is mean by matter? First one, what is mean by matter? Matter किसे कहते हैं? So anything having particular mass and occupies the space is nothing but the matter. जो किसी को भी कोई आपका खुद का एक वजन है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है तो उसको क्या बोलेंगे? मैटर. सो एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड occupies the space is known as a matter. Okay, now this matter can be exist in a different way. This matter can be exist in a either solid state or it may be a liquid or it may be a gas or it may be a different type of state. So what is the state? How the matter is present? So state of matter. So anything having particular mass and occupies the space is called as a matter, right? Now this matter exists in a different state in the different state. So the matter can be present in the gaseous state or liquid state or solid state, or there are other state also: liquid, solid, gaseous, then plasma, then Einstein condensate, okay, or mesophase. So this matter that occupies the space and it has a specific mass known as a matter. Now it exists in a gaseous, liquid. Now first let's talk about the gases. So gases means they have particular mass but they don't have particular shape, they don't have particular volume. Okay, so they don't have shape. So whenever you introduce a gas in a particular container, so it will take or it will occupy the volume of that container and it will take the shape of that container. So that is gas. Now in the liquid, so it will again not have a specific shape but it has a volume. So liquid also occupies the shape of container in which it is poured, right? अगर आप कप में अगर पानी लिया तो वो पानी का शेप कप के जैसा होगा. अगर आपने वही कोनिकल फ्लास्क में लिया तो उसका शेप कोनिकल फ्लास्क के जैसे हो जाएगा. ठीक है. सो गैसेस एंड लिक्विड, दीज टू डज नॉट हैव एनी shape. Okay, so they occupies, they takes the shape of the container, right? Now in the gases, molecules are free. Okay, in the gases the molecules are free, so they are present in the form of random motion. They have kinetic energy. But in the liquid, so in the liquid they are bound to each other. In case of solid will have a definite shape. सॉलिड को एक डेफिनेट शेप होता है. ठीक है. दिस गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल. गैसेस को आप कॉम्प्रेस कर सकते हो एंड आफ्टर कॉम्प्रेशन ऑफ गैसेस you can get there is a change in the state. So after compressing the gas you will get liquid of that gas. So remember, gases are compressible, they do not have any kind of shape, they will occupy the shape of container and they will occupy also the volume of container. Then liquid also does not have a shape. Liquids are again compressible. Let's come to the solid. Solid will have a definite shape and there is a strong intermolecular bonding. So there is a very weak intermolecular bonding in the, you can say there is no intermolecular bonding in the gas. You can say there is a weak intermolecular bonding in the liquid and there is a very strong intermolecular bonding of the matter in the solid. So that's why it will get a definite shape. Then plasma is there, then Bose-Einstein condensate is there. Okay, so these are the another state of matter. Bose-Einstein condensate and that plasma, we'll see it in our upcoming slide. So molecule which lies in between liquid and crystalline solid. Okay, एक तो क्या होगा, मैटर सॉलिड होगा, गैसेस होगा या फिर लिक्विड होगा. बट देयर आर फ्यू स्टेट, जैसे इंटरमीडिएट होता है लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में एक स्टेट होता है. ओके, सो स्टेट which is present or which the property of that state is between the liquid and crystalline state are known as a mesophase or liquid crystal. ठीक है. तो आपका डिफरेंट स्टेट होता है मैटर का. गैसेस होता है, आपका लिक्विड होता है, ओके, आपका सॉलिड होता है, प्लाज्मा होता है, Bose-Einstein condensate होता है. ओके, सो दिस प्लाज्मा एंड Bose-Einstein condensate they comes under the mesophase. Then supercritical होता है कंडीशन, supercritical state. So there are different state of matter. So remember, gases are compressible, they do not have any particular shape and volume. Whatever the container in which they are present, they will get the shape and volume of that liquid as well as gases. Now supercritical fluid is also another state of matter.
The properties of it lies intermediate between liquid and gases. Okay, and they are also considered as a mesophase only. Temperature and pressure are determinant for the state of matter. Means state of matter is based upon these two factors, temperature and pressure. तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिक्विड, sorry, for example if you are solid, so if you heat the solid it will be melted. Take an example of gas, take an example of your ice. जो आपके हाथ में अगर बर्फ है तो बर्फ को अगर आप हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा. बर्फ क्या है, सॉलिड है. सो आइस इज अ सॉलिड स्टेट. इफ यू हीट दैट आइस it will be converted into liquid state, and if you further heat that liquid will be converted into vapors, that is a gaseous state. So temperature and pressure are determinant for the state of matter. So again, so if you have vapors, okay, so apply pressure on vapors, the vapors will be condensed, so it will be condensed into liquid. So change in the state from vapor to liquid upon application of pressure. Again, if you apply pressure or decrease the temperature, liquid will be converted into solid. So temperature and pressure are the determinant for the state of matter. Okay, again state of matter grouped into, okay, state of matter grouped into different states like gases, liquids, solids. So gaseous state is known for its property to occupy the complete available space and change in the volume with respect to change in the temperature and pressure. ठीक है, गैसेस का और एक प्रॉपर्टी होता है, वो तो जिस कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसका शेप ऑक्यूपाई करेगा. लेकिन क्या, so change in the volume with respect to change in the temperature or pressure. So if you change the temperature or pressure, the gas will change its volume. So it has a property that the volume of gas will be changed with respect to temperature and pressure. Now liquid will take a shape of container in which they are present. Solid will have a definite shape as compared to gases and liquid. Okay, so change in the volume regarding the solid and liquid, okay, upon the change in the temperature and pressure. अगर गैसेस का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन जो सॉलिड होता है देर इज़ अ वेरी लिटल चेंज और देर इज़ अ निग्लिजिबल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इफ यू इंक्रीज और decrease the temperature and pressure. So there is very little impact of change in the temperature pressure on the solid. In addition to above these states, there are another state known as a mesophase, which lies between the property between liquid and crystalline solid. We have seen that. Upon increasing the temperature, change in the state of solid, okay, is there. Change in the state. Upon increasing the temperature, change in the state. Okay. So from solid, okay, from solid you will get liquid. From solid you will get liquid upon increasing the temperature, and still if you increase temperature from liquid you will get gases. So there is a change in the state upon increasing the temperature. Okay, upon removing the temperature, reverse is true. जैसे मान लीजिए कि आपके पास आइस है, आइस का टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से फिर से गैस बन जाएगा. और उसी तरीके से आपने अगर टेम्परेचर कम किया, so if you condense the vapor you will get a liquid, and if you still decrease the temperature of liquid you will get a solid. So reverse is true. Now let's come to the first, gaseous state. So it is a compressible fluid. It will not have any definite shape or volume. It occupies the container and gets the shape. So the shape of gas is that of the container. The volume of gas is equal to the volume of that of container. And this gaseous molecule will have kinetic energy. It will have a high kinetic energy, and intermolecular forces are nil. Intermolecular forces कम होते हैं लेकिन kinetic energy ज़्यादा आते हैं. That means molecules are constantly in a random motion. That is why the gaseous state will have high kinetic energy. At a temperature, gas below its critical temperature. अगर गैस को उसकी critical temperature के नीचे अगर temperature जाएगा, so it will be converted into vapor. Okay, so gas below its critical temperature is nothing but the vapors. It's called as a vapors. Now, what is the ideal gas law? So in that you have different laws. So change in the volume of gas with respect to change in the temperature and pressure. So what it laws is, first one is a Boyle's law. So at a constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to the pressure.
ये बॉयल्स क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट अगर टेम्परेचर रखेंगे आप और गैस का, ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ पर्टिकुलर मोल, ठीक है, मतलब गैस का अमाउंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, लाइक वाइज दैट. सो V means volume of gas is proportional to inversely proportional to the pressure. V is inversely proportional to 1 upon V. That means PV is equal to K. PV is equal to K. K is nothing but the constant. ठीक है, P pressure into volume is equal to constant. ये equation ऐसे, और in the other words you can say P1 V1 is equal to P2 V2. Pressure volume of gas 1 is equal to pressure volume of gas 2. When temperature means T, okay, when T and N means number of moles are constant, मतलब at a constant temperature and constant moles, the volume of gas is inversely proportional to the pressure. That is a Boyle's law. आपको ये laws पूछ लेते हैं कभी कभी कि this law is related with one of the following, this law is not related with, okay, ऐसा. Second law related to ideal gas, Charles law, okay, Charles law. Second one is Charles law. It states that the constant pressure, at a constant pressure, volume of gas is directly proportional to the temperature. अभी इसने क्या किया, इसमें पहले बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, और अभी चार्ल्स ने क्या किया कि बोला मैं टेम्परेचर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ. तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली टेम्परेचर. सो V is directly proportional to the T. V means volume and T means temperature. In the other word, you can say V divided by T is equal to K. K is a constant. By taking constant, V divided by T is equal to K. In another word, you can say V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 when pressure is a constant. Okay, that's a Charles law. Now another law is there known as a combined gas law. Okay, according to this law, volume of gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the pressure. Combined gas law मतलब it is a product of combination of these two. ये दोनों का combination करके combined gas law बनता है. So according to this law, volume of gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the pressure when N is constant. N means number of moles of gas. ठीक है. So in the mathematical terms you can say volume is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the pressure. Okay, or PV divided by T is equal to K, or P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T. Okay, as per the combined gas law. Now another law is there known as a Guy-Lussac law or Gay-Lussac's law, जो भी pronounce करना है, Guy-Lussac's law. At a constant volume, the pressure of gas is directly proportional to the temperature. अभी इसने क्या किया, इसने वॉल्यूम ही कांस्टेंट रख दिया. बॉयल्स ने क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया. चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट किया था. कंबाइंड लॉ में दोनों भी टेम्परेचर, और गाय-लुसाक लॉ में अभी देखो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, सो इन अदर वर्ड यू कैन से P is directly proportional to the T, or P divided by T is equal to K, or P1 divided by T1 is equal to P2 divided by T2. So that is known as the Guy-Lussac's law. Now another law is the Avogadro law. At a constant temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas. तो भाई इसने क्या किया, number of moles इंट्रोड्यूस किया, Avogadro law. At a constant temperature and pressure, यहाँ पे constant temperature है, pressure constant है, volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas. Okay, you can say here, just replace this P with V. V is directly proportional to N. That is V divided by N is equal to K, or V1 divided by N1 is equal to V2 divided by N2. That is a Avogadro law. So these four laws, just remember ideal gas law कितने हैं, Boyle's law, Charles law, combined gas law and Guy-Lussac's law, Avogadro law. There is another law known as the real gas law. So what is the difference between ideal gases and real gases?
as per the ideal gas law, the volume gas will occupy the volume of container in which it is present. But as per the real gas law, so you can go in and read from books. Now different binding forces in the molecule, कि molecule को bind करके रखने वाले कितने forces होते हैं, different binding forces in the molecule. So first one is the attractive and repulsive forces. Okay, so in the molecule two atoms are together due to equilibrium forces between attractive and repulsive forces. Okay, so two molecules are kept at a distance, मतलब two molecules are separated at a distance due to repulsive forces, due to similar charge or due to like charge present on them. ठीक है, जैसे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक मॉलिक्यूल के ऊपर और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मॉलिक्यूल एक में के साथ वो अटैच नहीं होंगे, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे. सो two molecules are kept at a distance due to similar charge present on them. That is nothing but the repulsive forces. Repulsive force will increase exponentially with the decrease in the distance between two molecules. ठीक है, जैसे दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो अगर नज़दीक आ गए मॉलिक्यूल तो वो रिपल्सिव फोर्स will increase. Okay, when two molecules come together, the distance between two molecules decreases, the repulsive forces increases exponentially, मतलब 10 raised to ऐसा 10 raised to 10, 10 raised to 1, 10 raised to 10 raised to 3. At equilibrium means at a particular distance, the potential energy of system will be minimum. Okay, in case of attractive and repulsive forces, you have different sub forces. So like van der Waals forces. These forces are made up of three different forces. First one is known as a Keystone forces, second one is known as a Debye forces, and third one is known as London attractions. So these three are the attractive or repulsive forces. So whatever attractive repulsive forces are there in the molecule, these forces are because of these Keystone forces, Debye or London attraction. Okay, now first we will see dipole or first one is dipole or Keystone forces. So dipole or Keystone forces. Weak attractive force which when large number of dipolar molecules are bring together. So जब आप कोई dipolar molecule होता है जिसमें दोनों पोल है, अगर वो साथ में लाया आपने, so dipolar molecule are brought together, so there is a weak attractive force developing. That weak attractive force is known as a dipole or Keystone forces. So weak attractive forces when a large number of dipolar molecule brings together, that leads to generation of dipole or Keystone forces. It is attractive forces. Then dipole induced dipole or Debye forces. So when non-polar molecule are kept close to the permanent dipole, so that time these forces came into picture. When these forces are formed, when a non-polar molecule kept close to the permanent dipole, so dipole induced dipole or Debye forces. So these two. Another one is induced dipole or London attraction. Industrial हो गया वहाँ पे, industrial नहीं होगा, induced dipole or London attraction. So when non-polar molecule induces polarity into other molecules, when non-polar molecule will induce polarity in another molecule, at that time induced dipole or London attractions are there. Then another kind of forces are present in the molecule known as ion dipole and ion induced dipole forces. Ion dipole or ion induced dipole forces. Now these forces act between polar and non-polar molecule and ions. And this kind of forces, that is ion dipole and ion induced dipole forces, are responsible for the solubility of ionic crystalline substances in water. For example, अगर आपने आयोडीन सोल्यूबलाइज करने का ट्राई किया, सो आयोडीन विल नॉट सोल्यूबलाइज. Iodine not will solubilize in the water, but it will solubilize in the water when you add common ion, another common ion, that is a potassium iodide. So iodine plus potassium iodide,
Now iodine can be soluble in the water. The solubility of iodine in the water is an example of this ion dipole and ion induced dipole. Another kind of forces are there known as the hydrogen bonds. Now bonds between molecules of hydrogen atom and strong electronegative atoms like nitrogen, oxygen, chlorine, fluorine, bromine, etc. So these are known as hydrogen bonds. So these are bonds also keep a molecule together. Okay? So whatever the molecules are there in the gases, liquids or vapors. तो तीनों पे भी मैटर है. मैटर मतलब molecules they are together in the matter. Okay, and these molecules are kept together by different forces, different attractive forces. What are these attractive forces? So attractive and repulsive forces, van der Waals forces, dipole, etc. Now hydrogen bonds. So these bonds and forces will keep the molecules together in a matter, right? Now again, simple gas can be defined by these three parameters. Simple gas can be defined by pressure, volume and temperature and number of moles. These are the four parameters: temperature, volume, pressure and number of moles. So number of moles कितने है गैस की, pressure, temperature and volume. So these four terms can define a simple gas. Now what is meant by pressure? Pressure is nothing but the force exerted by a molecule on the unit area of container wall. कि जो भी गैसेस की मॉलिक्यूल है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं कंटेनर के वॉल के ऊपर. दैट इज नथिंग बट द प्रेशर. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? इट इज आइदर ATM, that is atmosphere, okay, 1 atmospheric pressure, or mercury millimeter, that is mm of Hg, or Pascal, or Pascal means PA. Okay, so 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg, mercury millimeter, and that is equal to 1.13 into 10 raised to 5 Pascal, 10 raised to 5 A, 10 raised to 5 A Pascal. So remember this relationship: 1 atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg, in that is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. Then what is another term known as volume? So volume is nothing but the space occupied by that gas. So as that of the container, volume of gas is equal to volume of container, and it is mentioned in the ml, there is milliliter or liters or centimeters cube, centimeter cube or cubic centimeter. So volume is mentioned in the ml or liter or cubic centimeter. Now another term is there known as a temperature, so which is measured in the Kelvin. Temperature is measured in the Kelvin or degrees, if Kelvin or absolute degrees. So 1 Kelvin is equal to degrees plus 273. ये इक्वेशन याद रखो. 1 Kelvin is equal to degrees plus 273. Now critical phenomena. What is critical phenomena? So इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको. critical phenomena और different kind of laws, Boyle's law, Charles law, and Avogadro law, ideal equation, real equation, real gases, ideal gases. Now critical phenomena. Now this scientist known as Andres in 1869, he conducted an experiment. Okay, he conducted an experiment. He converted gases into liquid. That is a liquefaction of gases. He carried out the liquefaction of gases by reducing the pressure or by reducing the temperature. Now Andre found that all gas molecule below its critical temperature can be liquefied by increasing the pressure. So जैसे गैस के ऊपर प्रेशर डालेंगे और उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर टेम्परेचर है तो गैस क्या होगा? लिक्विड. सो एंड्रे फाउंड दैट ऑल गैस मॉलिक्यूल below its critical temperature can be liquefied by increasing the pressure. Now what is meant by critical temperature? The temperature of gas above which a gas cannot be a liquid state. So temperature above which gas cannot be in a liquid state. Okay, मतलब एक टाइम आएगा कि वो टेम्परेचर आ गया तो लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा. मीन्स ए टेम्परेचर अबव विच गैस कैनॉट बी ए लिक्विड स्टेट, दैट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर. नाउ क्रिटिकल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस. मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, इट इज नथिंग बट द क्रिटिकल प्रेशर. मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज द क्रिटिकल प्रेशर. मतलब मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए टू लिक्विफाई द गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर होना चाहिए सो दैट गैस विल बी लिक्विफाइड, दैट इज नथिंग बट द क्रिटिकल प्रेशर. नाउ अगेन क्रिटिकल वॉल्यूम, these are the terms. Critical volume, volume occupied by 1 mole of gas at a critical temperature and pressure is known as a critical volume.
क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर के 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम. नाउ क्रिटिकल फिनोमेना, क्रिटिकल फिनोमेना उसका डेफिनेशन, critical temperature and pressure of gas, at a critical temperature and pressure of gas, at a critical temperature and pressure a gas behaves similar to liquid. Okay, at a critical temperature and pressure gas will behave like a liquid and it is said to be in a critical state. कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस है वो गैस की तरह नहीं लिक्विड की तरह बिहेव करेगा एंड इट इज सेड टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट. This phenomenon is known as a critical phenomenon. Okay, critical phenomenon. Now, changes in the state of matter, that is liquefaction of gases. Changes in the state of matter, liquefaction of gas. So, it is done by decreasing the temperature or increasing the pressure on gas. अगर गैस को लिक्विफाई करना है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करो या फिर उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करो. सो द लिक्विफिकेशन ऑफ gas is done by decreasing the temperature or increasing the pressure. Gas can be liquefied below its critical temperature by increasing the pressure. Now there are different methods to liquefy the gases. So methods like Faraday method, then Linde's method and Claudius method. So Faraday's method, Linde's method and Claudius method. These are the three methods to liquefy the gas. अभी ये जो Faraday's method है, in that method gases are passed into cool arc. जो कूल एरिया है उसमें पास करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस का लिक्विफिकेशन करना है आपको, सो जस्ट पास द क्लोरीन थ्रू दिस फैराडे कप और फैराडे आर्म, सो विल गेट लिक्विफाइड क्लोरीन. इफ यू वांट टू लिक्विफाई द सल्फर देन जस्ट पास द सल्फर ऑक्साइड थ्रू दिस, यू विल गेट अ सल्फर. सो फैराडे. Then Linde's method is also there and Claudius method is also there. So just remember the names of method. If you want to read in the detail, you can read from Physical Pharmaceutics by Dudley. Otherwise, in the last I will explain. Now, boiling point, temperature of liquid at which vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. जब atmospheric pressure और vapor pressure जो है liquid का वो जब एक जैसे होता है तभी liquid का boiling होता है. When a temperature of liquid, boiling point is nothing but the temperature at which vapor pressure of liquid will become equal to the atmospheric pressure. मतलब वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस वाज रिगार्डिंग द गैसेज स्टेट. नाउ लिक्विड स्टेट, ठीक है. नाउ लिक्विड स्टेट, सो गैसेज स्टेट में क्या होता है, गैसेज स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर प्रेजेंट इन द रैंडम. So they are present as a random and they are moving here and there, random motion. Okay, so intermolecular attractions in the gases are very weak. Remember, intermolecular attraction in the gases are very weak. Now in this liquid state, it lies between gases and solid. Gases and solid के बीच में liquid state होता है. Now in case of liquid, molecules are in a state of random motion again, but less as compared to gases. तो gases में क्या होता है कि molecules are in a tremendous random motion. वो इधर उधर मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं, उनको कोई लगाम नहीं है. लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या है, यहाँ पे भी रैंडमली घूमते रहते हैं लेकिन उनको लगाम है. ओके, सो हियर लिक्विड विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू गैसेस. सो वट एवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज देयर, सो इट कैन बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. ओके, और जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ता है सो लिक्विड जो है वो वोलेटाइल हो जाता है, विच इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड which can be increased by increasing the temperature. जैसे ही आप हीट करते हो लिक्विड को तो उसमें क्या होता है कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड का वो बढ़ जाता है. काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर. और जैसे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वहाँ पे आ जाता है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टाइम पे उसका इवापोरेशन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाता है. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट लाइक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर दैट कैन एक्सप्लेन द terms of attractive forces present in the liquid. तो viscosity, तो more will be the viscosity, more will be the attractive forces. So more will be the attractive forces present in the liquid, that's why the liquid has more viscosity. Surface tension is also same, more will be the intermolecular attraction in the liquid, so more will be the surface tension. Vapor pressure, less will be the intermolecular attraction. Vapor pressure के बारे में अलग है. Vapor pressure कब ज़्यादा होता है
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जब कम होता है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. Now these explain the forces present in the liquid. Now viscosity is nothing but the resistance to flow the liquids. Again it is a indicator of your cohesive or attractive forces present in the liquid. Now what is surface tension? In the bulk of liquid molecule are attracted in every direction. We have seen in the surface tension and interfacial phenomena. But at the surface attractive force is unbalanced because of that inward pull, which is balanced, okay, which is balanced by another force known as a surface tension. So molecule on the surface experience inward pull, that is a tension, because of the greater number of molecule per unit volume of the liquid in the wave. This force which counteract this tension. So जैसे bulk of liquid में जो molecule होता है वो हर तरफ से in every side it is being attracted, it is being the force being enacted on it. But those molecules which are present on the surface, that is attracted only from the downward, from the bulk of molecule. So inward pull. To counteract that inward pull, there is another force known as the surface tension. Surface tension is not the counter force applied on the net inward pull of the molecule on the surface. So that is known as surface tension. Then vapor pressure, the pressure exerted by liquids, pressure exerted by vapors of liquid which is in equilibrium with that of the condensed phase, known as vapor pressure. कि जो वेपर है लिक्विड का वो उसका प्रेशर कितना है, दैट प्रेशर इज exerted by vapors of liquid in equilibrium with the condensed phase. जो लिक्विड है itself bulk liquid, that is called as vapor pressure. तो जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर ज़्यादा, अगर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट लिक्विड इज वोलेटाइल इन नेचर. जैसे आपका क्लोरोफॉर्म वगैरह होता है. इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, जैसे आप हीट अप्लाई करोगे तो इवापोरेशन होगा, हीट रिमूव करोगे तो कंडेंसेशन होगा. रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय क्लॉसियस-कैप्रेलॉन इक्वेशन. सो ये याद रखो एज इट इज, ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय क्लॉसियस-कैप्रेलॉन इक्वेशन. ये एज इट इज लाइन याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी सकता है. Okay, so Clapeyron equation gives the relationship between vapor pressure and absolute temperature. कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा. सो टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर. रिमेंबर दिस इक्वेशन बाद में आप बुक में से देख लीजिए. नाउ सॉलिड स्टेट, ओके, वी हैव सीन द गैसेस, लिक्विड एंड नाउ सॉलिड स्टेट. मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट दे आर पैक्ड टुगेदर हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे गैसेस में क्या है, वेरी वीक और निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूल. बट लिक्विड में क्या है, उसमें उससे गैसेस से ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है और लिक्विड से भी ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट. सो मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दे विल हैव अ डेफिनेट शेप एंड मेंटेन द वॉल्यूम. ओके, they will have a definite shape. Solid will have a definite shape and their volume, maintain their volume. Now the volume of solid is independent of the container and solids are nearly incompressible. ये compressible नहीं होते. Compressibility is 10 times as compared to gases. मतलब gases से ज़्यादा 10 टाइम फोर्स लगेगा इनको compress करने में, but it is incompressible. So on heating mostly they will melt and some of them will be undergo sublimation. अगर वो है तो सब्लिम स्टेट में भी जा सकते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन हीटिंग मेल्ट होते हैं, कुछ सब्लाइम होते हैं जैसे सल्फर, आयोडीन. क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या? सो मॉलिक्यूल्स दे आर पैक्ड इन अ ऑर्डरली मैनर, मतलब रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है इसमें. क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब व्हेन मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्री और इन अ ऑर्डरली मैनर. तो मॉलिक्यूल अच्छे से पैक हुआ है वहाँ पे, तो उनमें क्या है, एनर्जी जो है वो लेस है. सो मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन ऑर्डरली मैनर एंड दे विल हैव लोअर एनर्जी एंड देयरफॉर दे विल हैव लोअर सॉलिबिलिटी. सो रिमेंबर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका सॉलिबिलिटी कम होता है, बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल रेगुलर पैटर्न होता है उसमें. ओके, सो मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर इन अ रेगुलर ज्योमेट्री ऑर्डरली मैनर and that's why they will have less energy and then therefore they will have less solubility. ठीक है. Temperature by which crystal lattice breaks. Okay, the temperature by which crystal lattice
of a crystalline solid will break, known as a melting temperature or melting point. And remember crystalline solid will have sharp melting point. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो 2-3 प्रॉपर्टी याद रखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड विल हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ particles in the crystal lattice, then they will have low energy, and that's why they will have low solubility, and they will have sharp melting point. ठीक है. ये now we will see the same properties of your amorphous solid. crystalline solid जो है they will have different shapes. shape उनके कैसे होंगे? they will have different shapes like cubic, hexagonal, trigonal, tetragonal, orthorhombic, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, उनके शेप्स रहेंगे ये सब. तो एमॉर्फस जो होता है उसको शेप नहीं रहता. क्रिस्टलाइन जो होता है उसको शेप होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप, क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक. वी हैव सीन इन द व्हेन वी आर डिस्कसिंग द क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर इन द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स. कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. सो मॉलिकुलर क्रिस्टल, फर्स्ट वन इज अ मॉलिकुलर क्रिस्टल. द पार्टिकल component held together by weak attractive forces. जो particle है in the crystal, the particles of matter is held by weak attractive forces. Van der Waals process, जैसे van der Waals process. Okay, यहाँ पे ये spelling गलत है. van der Waals process. For example, in case of dry ice, wax, iodine, sulfur. जैसे iodine होता है, sulfur के crystals होते हैं, iodine के crystal, या फिर wax होता है, या फिर dry ice. So they are known as molecular crystal. So particle component of matter, they are held together by weak attractive forces like van der Waals process. So examples याद रखो. So examples पूछते हैं. So dry ice is examples of one of the following type of crystal, molecular crystal और उसके दूसरे type. So we'll see second type. Second type is nothing but the ionic crystal. Okay, ionic crystal. इसके ऊपर GPAT 2020 में क्वेश्चन पूछे. And positively and negatively charged ions, they are arranged in a regular fashion or in a geometry in the crystal, held together by strong electrostatic force. So ionic crystal में क्या होता है? Electrostatic force. So particles of matter are held together by strong electrostatic force in the ionic crystal, and crystals are brittle and hard, having high melting point and boiling point. Example: sodium chloride and lithium fluoride. So they are known as a ionic crystal. So positively and negatively charged ions are arranged in a regular geometrical pattern in the crystal, held together by strong electrostatic force, and they will have high melting point, high boiling point. Example is sodium chloride and other like lithium fluoride. So this is a ionic crystal. इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था GPAT 20 में. So the crystal of sodium chloride is one of the following. Third type of crystal is nothing but the covalent crystal. Third type of crystal is nothing but the covalent crystal. So particles of the atom are held together by a network of covalent bond. तो इसमें क्या होगा? मैटर के जो पार्टिकल है वो कोवेलेंट बॉन्ड से हेल्ड किए जाएंगे इन अ क्रिस्टल लैटिस. दे आर हार्ड, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन वोलेटाइल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायमंड, कार्बोरोडियम, डायमंड, कार्बोरोडियम, क्वार्ट्ज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल. तो एग्जांपल्स याद रखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रिस्टल, ठीक है. मॉलिकुलर क्रिस्टल किसका है? ड्राई आइस, वैक्स, आयोडीन, सल्फर. आयनिक क्रिस्टल किसका है? सोडियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड. कोवेलेंट क्रिस्टल किसका है? क्वार्ट्ज, ठीक है, देन डायमंड एक्सेट्रा. सो यू शुड नो द टाइप ऑफ क्रिस्टल. क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड विल हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल: मॉलिकुलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल. ऐसे. नेक्स्ट वन इज अ मेटालिक क्रिस्टल. So particle constituents are positive kernels. Particle constituents are positive kernels, that is nuclei in which electrons are dispersed as a sea of mobile valence electrons. The forces present in this type of crystal are metallic bonds. For example, nickel, copper and other alloys. Nickel, copper, other alloys. ठीक है. निकेल में, कॉपर में जो फोर्स, जो दैट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड्स. ओके, मेटालिक बॉन्ड्स. तो इसमें मेटालिक क्रिस्टल, इसका एग्जांपल है निकेल एंड कॉपर. सो मेटालिक क्रिस्टल. रिमेंबर, मॉलिकुलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल,
Now another phenomenon is known as the polymorphism. So these are the 4 types of crystal. ये क्या है, टाइप्स है क्रिस्टल के, तो इसके बारे में एक और बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए. सो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल: मॉलिकुलर क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, कोएलेंट क्रिस्टल्स, देन मेटेलिक क्रिस्टल. मॉलिकुलर क्रिस्टल में क्या है, पार्टिकल हेल्ड टुगेदर बाय वीक अट्रैक्टिव वैन डर वाल फोर्सेस. एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है, सल्फर, आयोडीन, वैक्स एंड आइस. आयनिक क्रिस्टल में क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड टुगेदर होते हैं. एग्जाम्पल इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड. नाउ कोएलेंट क्रिस्टल में क्या है, कोएलेंट बॉन्ड रहेगा. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज हेल्ड टुगेदर बाय कोएलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डायमंड एंड क्वार्ट्ज, डायमंड, क्वार्ट्ज, कार्बोरोडियम. देन मेटेलिक क्रिस्टल में क्या है, मेटेलिक बॉन्ड रहेगा. पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल दिस कॉपर, alloys, निकेल एक्सेट्रा. So these are the types of metallic, these are the types of crystal. क्रिस्टल के टाइप कितने होते हैं, कौन सा बॉन्ड है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नाउ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्टेट. ओके, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म. जब क्रिस्टलाइजेशन होता है कंपाउंड का, अगर वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म with different internal lattices. Okay, now these different crystalline form will have different physical properties, and if these have different physical properties, they also have different therapeutic, they will have different absorption pattern, different melting point, different likewise. So different crystalline form will have different physical properties, remember. Okay, mostly found in the crystals of metals, minerals, polymers and allotropy. So this polymorphism is most found in the crystals of metals, minerals and polymer to allotropy. Now different crystalline forms of compound will have different physicochemical properties. For example, chloramphenicol palmitate. तो chloramphenicol palmitate, जो chloramphenicol का ईस्टर है, palmitic acid प्लस chloramphenicol का palmitate का जो ईस्टर है, उसके 3 polymorphs होते हैं. There are 3 polymorphs of chloramphenicol palmitate, A, B, C. Out of these, polymorph B has a more solubility and bioavailability. So out of these, polymorph B जो है, that is having more solubility and more bioavailability. बाकी का उतना bioavailable नहीं रहेगा. So that means different polymorphs will have different physicochemical properties. So likewise, for example, cocoa butter, that is a suppository base used in the manufacture of suppository. So when you heat the cocoa butter at 37 degrees Celsius, more than 37, so it will crystallize in a different crystalline form, alpha, beta, gamma. So out of these 3, beta form is stable. So likewise that. Now diamond and graphite are the most common example of polymorphic compound composed of same material but having different properties. जैसे एग्जाम्पल क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो डायमंड जो है उसका हार्डेस्ट मटेरियल होता है, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. देन ग्रेफाइट क्या है, उतना हार्ड नहीं होता. उनका मटेरियल सेम ही है, कार्बन. ओके, सो ऑल आर नथिंग बट मेड ऑफ कार्बन. सो दीज आर द क्रिस्टल मेड ऑफ कार्बन, बट दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज. सो डायमंड का कितना वैल्यू है और ग्रेफाइट का कितना है, देख लो. नाउ नेक्स्ट विल सी amorphous solid. Now it was regarding the crystalline solid. Now amorphous solid. Amorphous solid will not have particular shape. Amorphous solids will not have particular crystal shape. Okay. Amorphous solid, they are randomly arranged in the crystalline lattice. Amorphous solid molecules of particles are randomly arranged and they will have high energy. Random arrangement होता है उसका, इसकी वजह से उनका एनर्जी ज़्यादा होता है, और if there is a more energy, there is a more solubility. So that's why amorphous solids are more soluble than crystalline. ये तो नॉर्मली इसके बीच में कंफ्यूजन होता है कि क्रिस्टलाइन को ज़्यादा सॉलिबिलिटी, क्रिस्टलाइन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ particles होता है in the crystal lattice, and that's why it will have less energy and less solubility. But in case of amorphous, random arrangement of particle in the crystal lattice and therefore high energy and therefore high solubility. Okay, and it will not have any definite geometrical shape. So crystalline solid will have sharp melting point. This amorphous solid will not have sharp melting point. So amorphous solid will not have specific geometrical shape and no sharp melting point. Okay.
amorphous solids are sometimes called as supercooled liquid because they behave like a liquid. इसका ज़्यादा solubility होता है और बायो अवेलेबिलिटी भी इसका ज़्यादा होता है. That's why amorphous solid has a application in the pharmaceuticals. ये amorphous solid का बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि solubility ज़्यादा होता है. Now other state of matter, तो ये हो गया solid, liquid. Okay, so gaseous, liquid and solid. Now what are the other state of matter? इनके बीच में जो state है उसको बोलेंगे other state. Now first one is supercritical fluid. Supercritical fluid. So the properties of this supercritical fluid lies between the gas and liquid. और गैस और लिक्विड के बीच में जो है इनकी प्रॉपर्टी रहेंगी. When gas is heated to its critical temperature, liquefaction of gas without significant increase in the viscosity is nothing but the supercritical fluid. When gas is heated to its critical temperature, the gas will be liquefied. Okay, liquefaction of gas without increase in the viscosity. मतलब लिक्विड जैसे रहेगा लेकिन पूरा लिक्विड नहीं रहेगा. So it is known as a supercritical fluid. It looks like a gas, but it has a typical density of liquid and characteristic dissolving power also. Carbon dioxide and water, they are most commonly used as a supercritical fluid in the supercritical fluid chromatography. It is used as a mobile phase. Supercritical fluid is used as a mobile phase in case of supercritical fluid chromatography. अभी ये analysis का part होगा. Now plasma is another state. जैसे gaseous, liquid and solid, ये तीन state है. जैसे supercritical fluid एक state है और plasma भी एक state है. Plasma is nothing but the ionized gas to which sufficient energy is provided to free the electrons from the atom or molecules. Both electrons coexist, both ions and electrons coexist in the same. Plasma is similar to gas, but its atoms are made up of free electrons and ions. That is another state. So plasma is nothing but the ionized gas, that is known as a plasma. Then last state of matter is a Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. It is a gaseous superfluid phase formed by atom at a cold temperature near to absolute zero. Gaseous superfluid phase formed by atom at a cold temperature very near to absolute zero. तो ये Bose-Einstein condensate भी एक फॉर्म होता है. So this was regarding the today's session, and in the Wednesday we will